है गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू अनदर वीडियो। तो आज का वीडियो में हम ड्रॉ करेंगे इस महादेव जी का ये रेफरेंस फोटो जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर मैं कोई भी मेथड का यूज़ नहीं करूँगा, फ्री हैंड ड्रॉ करूँगा। तो आप लोग देखिए मैं कैसे करता हूँ और मेरे साथ भी कर लीजिए आप। फ्री हैंड ड्रॉ करने के लिए हमें रेफरेंस फोटो का अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ता है। एक पार्ट से दूसरे पार्ट कितने दूरी पर है वो हमें अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ता है, तभी जाकर हम एक अच्छा सा रेफरेंस फोटो को अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फेस पर सर्कल की तरह दिख रहे थे, वो सर्कल हमें इस पेपर पर ड्रॉ कर गाइस। मैं मानता हूँ कि ऐसे छोटे छोटे रेफरेंस फोटो के लिए हमें कोई भी मेथड यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें फ्री हैंड ही ड्रॉ करना चाहिए, तभी हमें ऑब्जर्व करने की आइडिया मिल सकती है। तो इतना करने के बाद फेस में आप देख सकते हैं जो दो हिस्से हैं, वो दो हिस्से को आपसे ऑब्जर्व करके पेपर पर यूज़ करना है। तो ऐसे ही फ्री हैंड ड्रॉ करने के लिए आपको रेफरेंस फोटो को अच्छे से देखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट कितने दूरी पर है, तभी जाकर आप सेम टू सेम ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए मैं किस तरह कर रहा हूँ एंड एंजॉय द वीडियो। Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on है गाइस, यहाँ पर हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं कैसा हुआ, और आई होप आप लोगों को समझ आई होगी कि फ्री हैंड कैसे ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं इस इन फोटो का कलरिंग वीडियो अपलोड कर दूँगा, तो आप लोग उस वीडियो को भी विजिट कर लेना। तब तक के लिए बाय।